इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हैंड वॉश की ये बॉटल ले लिए। कुछ इस तरीके से हमने पीछे के साइड में होल किए। इसके अंदर हम एक स्टील की रॉड लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे चिपका देना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे चिपका दिया कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर। अच्छी से चिपकाना है कि निकल ना हो। और आगे की साइड में हमें कुछ इस तरीके से स्टेप्स करने हैं। ये ढक्कन है प्लास्टिक की, कुछ इस तरीके से ऐसा हो फिक्स बैठे कुछ इस तरीके से। और हमें चाहिए एक गैस लाइटर। इसको हम कुछ पीछे से कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये आधा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ इस तरीके से ऊपर सेट कर देते हैं। चिपका देंगे और आगे का स्टील की रॉड को इस तरीके से हम चिपकाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी लगा लेते हैं। हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे रॉड में के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। तो मॉडल के नीचे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इस टेप को उखाड़ लेते हैं पहले। अब यहाँ पे काट देंगे बोतल के साइज़ का। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ फिक्स बैठ रहा है। तो हम इसको चिपका देते हैं वापस से।
तो गाइस इसको हमने इसको बना लिया है। अब इसको चला कर देखते हैं किस तरीके से चलता है। इसको देख सकते हैं कितना आसान तरीके से बनाए हैं। इसका देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेप मार लिया है। ये स्टील की पाइप है और ये लिपस्टिक का ढक्कन है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठाना है, कुछ इस तरीके से। और हैंड वॉश का ये बॉटल है और ये पीछे के गैस लाइटर लगाए हैं। इसके अंदर हम अल्कोहल को थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं इधर उधर। उसके बाद इसको प्रेस करते हैं तो ये फायर होता है। इसको बनाना काफ़ी इजी है, लेकिन आप इसे घर पे ट्राई मत करना, बहुत ही खतरनाक है। चलिए इसको हम चला कर अब दिखाते हैं आप किस तरीके से ये चलती है।